class. Yeah, two people started talking together. One by one, please. हाँ. Sir, may I do the first? सर लास्ट क्लास में एनालिसिस से पहले आपने जो एक एग्जांपल बताया था कि डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट कुछ क्लेम फाइल कर रहे हैं, को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट क्लेम फाइल कर रहे हैं. I'm unable to understand what you were asking. बताओ, सेक्शन 3 में थे कि सेक्शन 4 में थे? काउंटर क्लेम नहीं सर, सेक्शन 3 के एनालिसिस से जस्ट पहले वाला पॉइंट. सेक्शन 3 के एनालिसिस से पहले वाला पार्ट ये सेकंड लास्ट पैरा सर. For the defendant, the counterclaim can be filed by the defendant against the plaintiff. In some instances, he can claim from co-defendants along with the plaintiffs, but a counterclaim solely to claim from the co-defendants is not entertained by the courts. हाँ जी सर. सर इसमें जस्ट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना था सर. अगर मैं जनरल वे में सोचूं तो सर इंस्टेड ऑफ फाइलिंग काउंटर क्लेम में ट्रांसपोजिशन ही ना करा लूं, क्योंकि प्लेंटिफ भी तो वही कर ही रहा है. तो ऐसा थोड़ी है कि लिमिटेशन के बाहर से फिर भी बच जाओगे. नहीं, बच तो फिर भी नहीं सकते सर. जस्ट एक प्रोफेशनल उससे सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्लाइंट आता है मैं इसमें क्या कर सकूंगा, अगर जनरल सेंस में सोचूं सर तो. हाँ, देखो, somehow limitation is always there. Yes sir. Even if you are transposing or you are, देखिए, ट्रांसपोज भी आप मान लीजिए कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या होगा? विजा विज जिसके भी आप होंगे, लिमिटेशन तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी. बिल्कुल सर. राइट. तो अब हम लोग प्रैक्टिकल जब काम करते हैं तो फिर लिमिटेशन से बचने के लिए फिर कॉज ऑफ एक्शन को कहीं ना कहीं रिसेंट में दिखाते हैं. राइट. कोई रिसेंट कम्युनिकेशन करवा लेते हैं, लिमिटेशन में फॉल करा देते हैं उसे. हाँ, कुछ ना कुछ कराते हैं या फिर दिखा देते हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन. हाँ जी. कोई भी उसमें ऐसी चीज ढूंढ निकालते हैं जिससे कि लगे कि कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन था भाई. राइट. तो कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन में रहेगा लिमिटेशन, हम टाइम बार नहीं होंगे. तो एस्केप करने के तरीके हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है एस्केप. हाँ जी सर, कई बार becomes impossible if your client gets up 15 years after the cause of action arose. तो इन 15 years में तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे. क्या कर लोगे? सूट के केसेस में तो सर बिल्कुल नहीं कर सकते, 3 साल होने. और सूट में तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिलती भी नहीं. हाँ जी. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 अगर आप देखें तो सेक्शन 5 तो है ही नहीं सर, सूट पे है ही नहीं. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सूट. सूट उसमें वर्ड ही लिखा हुआ है. इट्स फॉर अपील एंड एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन के लिए आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ले सकते हैं, या अपील के लिए जनरली हम जाते हैं जब अपील में लेट हो गए. हाँ जी. तो हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसे एमए बोला जाता है. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है. अदरवाइज सूट में अगर आप टाइम बार्ड हैं तो सेक्शन 5 भी आपको नहीं बचा पाएगा. तो लेकिन है, कुछ तरीके हैं. सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है, 10 है, 14 है. राइट. और भी सेक्शंस हैं. इसके लिए आपको क्लाइंट के साथ बैठकर उसकी पूरी गाथा सुननी पड़ेगी. राइट. समटाइम्स द क्लाइंट्स बिहेव इन अ वेरी फूलिश मैनर. दे स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली. या तो वो फैक्ट्स आपसे हाइड करते हैं, या वो इतने ऑब्सेस्ड हैं अपने फेवर वाले फैक्ट्स को लेकर कि वो ऐसे फैक्ट्स को मिस कर जाते हैं जहां पे सच में हम कुछ ना कुछ स्कोप दिला सकते हैं उनको. राइट. बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई एम गिविंग यू वन पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक क्लाइंट था जो कि 1 साल तक मेरे टच में रहा, तब जाके मैंने उसको असली या सही में समझा. आई अंडरस्टूड हिम, और रिलीफ मैं उसको दिला पा रहा हूँ. राइट. क्योंकि इस 1 साल में उसके केसेस को जो मैंने स्टडी किया, तो कुछ चीजें तो मैंने ढूंढ के निकाली. उस क्लाइंट को वो याद भी नहीं था, या उसे लग ही नहीं रहा था कि वो क्यों बोलना है यहाँ पे, हाउ इज इट रेलिवेंट. लेकिन कभी कभी कोई भी चीज ऐसी निकल आती है. फॉर एग्जाम्पल, उस क्लाइंट की कहानी, वो आया था मेरे पास डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के केस के लिए. तो किसी और एडवोकेट से वो एनसीएलटी चंडीगढ़ में भी था. राइट. तो एनसीएलटी चंडीगढ़ में
पिछले 3 सालों से उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी फॉर एडमिशन। 2 सालों में तो एनसीएलटी ने कोई काम ही नहीं किया था, बट ही वॉज देयर इन द ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी में वो था। डीआरटी के लिए वो टाइम बार्ड हो चुका था। राइट, माय क्लाइंट वर्सेस बैंक, एनसीएलटी में प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा चुकी थी सेक्शन 10 के लिए। राइट, सेक्शन 10 में कंपनीज खुद अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग्स लेकर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के प्रोसीडिंग्स होने ही नहीं चाहिए। राइट, वो तो मोरेटोरियम लगा हुआ होता है उसमें, लेकिन मोरेटोरियम ना मांगा एनसीएलटी के एडवोकेट ने, ना दिया गया। राइट, केस फॉर एडमिशन ही चलता रहा। तो डीआरटी में हमने इसका लगा दिया एप्लीकेशन सेक्शन 17 का। कुछ वक्त बीता। राइट, बैंक वालों ने टाइम बाई किया उस वक्त। राइट, वो भी शायद जल्दी में नहीं थे, उस वक्त कोरोना का टाइम था, तो उन्हें भी लगा कि नहीं, थोड़ा डिले करके ही हम प्रॉपर्टी बेचेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो जोड़े जा रहे थे, तो उनको तो कोई नुकसान था नहीं, और कोलेटरल वैल्यू ज्यादा थी और आउटस्टैंडिंग कम, तो वो तो खुश थे नो प्रॉपर्टीज रख के। लेकिन जब when I came to know about the NCLT proceedings, so I badly scolded this client. I said that when you came to me, तुम सब कुछ बताओ, the way you go to a doctor, right? तो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है कि चाहे क्लाइंट आपके लिए कोई तकलीफ लेके आया हो, क्लाइंट आपके पास आया है कि मेरे सर में ना लगातार 2 दिनों से दर्द है, फिर भी उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि अच्छा पैर में भी चोट है क्या, घुटने में भी दर्द होता है क्या, गैस की प्रॉब्लम है क्या, डायबिटीज है क्या। राइट, व्हाई शुड ही नो ऑल अदर थिंग्स, बिकॉज द थिंग्स में बी कनेक्टेड। सेम इज द केस हियर। तो अपने क्लाइंट से आप सारे फैक्ट्स लो, उससे ये भी लो कि क्या पति पत्नी के बीच वाला भी कोई प्रोसीडिंग चला था क्या, जानो ना। टेल हिम कि तुम मत डिसाइड करो क्या रेलिवेंट है क्या नहीं रेलिवेंट है, हम डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक केस में मैंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इसी बात पे ले लिया कि भाई 498A का केस लड़ रहा था मेरा क्लाइंट, और 498A मतलब पारिवारिक मामला, कोई ऐसे जनरल मामला नहीं है कि आपसे नहीं कहा जा सकता कि उसमें डिस्टर्बेंस की क्या बात है भाई। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मानसिक त्रासदी का इससे बड़ा और क्या एग्जांपल हो सकता है। राइट, व्हेन द लाइफ बिकम्स अ हेल, जब घर ही आपका नर्क बन चुका हो, तो बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है कॉन्डोनेशन का भाई, इट्स अ सफिशिएंट कॉज। राइट, तो अच्छा हुआ ना उस क्लाइंट ने मुझे बता दिया, अगर वो सिर्फ ये कहने आता कि सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ना मेरे पे पेनल्टी लगा दी है 1 करोड़ की, तो आप इसमें मेरा एप्लीकेशन लगाएं। अगर मैं सिर्फ इतना जानता, सिर्फ इतने काम से काम रखता, राइट, और क्लाइंट लगभग मुझे लगता है कि 9 या 10 महीने डिलेड था अपील में। राइट, लेकिन उस क्लाइंट की एक अच्छी बात ये थी ना कि उसने ना अपनी पर्सनल स्टोरी भी मेरे साथ शेयर की, और ये ग्राउंड बना, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस ग्राउंड पे डिले कंडोम किया। राइट, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, घर मेरा नर्क बना हुआ था, 498 का केस मेरे पे था, मैं एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भागा हुआ था, अपनी बहनों के लिए भी, माता पिता के लिए भी, खुद के लिए भी। तो वैसे में मैं कैसे करता अपील। राइट, तो यू शुड नो अदर स्टोरीज ऑल्सो। हालांकि प्राइमा फेसाई एक इकोनॉमिक ऑफेंस का केस, उसमें पति पत्नी के बीच का डिस्प्यूट रेलिवेंट सुनने में नहीं लगता है, लेकिन है। सो दैट इज व्हाई इफ यू रियली वांट टू शाइन इन योर प्रैक्टिस, you should have someone who can ask irrelevant questions from the client. Irrelevant questions उससे पूछो, ठीक है, क्या पता उसकी लाइफ का कौन सा फैक्ट उसके केस में आप फेवरेबली यूज कर पाए। केस चाहे कोई भी हो, लेकिन फेवरेबली आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो आई थिंक काउंटर क्लेम और सेट ऑफ ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। राइट, so had we completed the discussion of section 3 in the last class? You just remind me this much.
Yes, Ankasha was speaking or Roma was speaking. Who was? Ankasha, you were saying something? Some lady was saying something. Yes, yes, Yeah. sir. We were doing analysis of section 3, and we have to start from point number 9. So point number 9. Yes, sir. Okay. So we have completed our discussion till section 8. 8 में recapitulate कर लेते हैं कि suppose A files a writ petition in the High Court or Supreme Court, but the court asks him to file a suit, which is an efficacious alternative available to the petitioner. Here, order or observation of the High Court or Supreme Court permitting filing of a fresh suit does not extend the period of limitation. Why? Because the person should not have gone to the High Court or the Supreme Court. He should have gone to the appropriate court in the first instance. He did not do that. हाई कोर्ट ने तो बस उसको कहा है कि विड्रॉ करो यहाँ से, तुम गलत जगह आ गए। जब इक्वली एफिकेशियस रेमेडी कहीं और तुम्हें मिल सकता है, वहां क्यों नहीं होता? तो ये जो पीरियड उसने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिताया, इस पीरियड में उसको कोई लैटिट्यूड नहीं मिलेगी, राइट? मींस द क्लॉक ऑफ लिमिटेशन continued during the period when he was in High Court or Supreme Court, right? No fresh cause of action arises when such an order is passed by the High Court or the Supreme Court that go to the alternative court. So section 8 तक हम समझ चुके थे. I think you don't have any doubt in respect of all the things that we had studied in the last class. So we start from the 9th point, exception to the rule in point 1. Now, this is a theoretical exception. What we are going to do is a theoretical exception. And this exception has not been followed by the courts. But for academic discussion, I have included here. Right? लेकिन मान कर चलो कि courts अब आजकल ये ना सुनती नहीं है, इसको follow नहीं किया जाता है. एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने follow किया था, but most of the high courts don't follow this maxim. It is an exception to the rule we have read in section 3. रूल है, मैक्सिम है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, राइट? ओवरव्यू में आपको दे देता हूं कि इफ सम एक्ट इज इम्पॉसिबल देन इट मे बी एक्सक्यूज्ड, राइट? फॉर एग्जांपल, मुझे अपील करना था लेट से 30 डेज के अंदर, आफ्टर द जजमेंट वाज गिवन अगेंस्ट मी, आई हैड द टाइम ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट. We have 30 days. I could not go in appeal in 30 days because, as per the prevailing law, I was required to take sanction from the central government, right? Without prior sanction from the central government, an appeal could not be filed. So I had to wait. I had made an application to the government, the appropriate authority, for giving me the sanction, but they took 1 year in giving me the sanction. In this case, the Bombay High Court held that here the person was helpless, right? The appellant could not have come to the court, the appellate court, without prior sanction from the central government, whereas the central government delayed. So obviously this was not in control of the appellant, right? The appellant could not compel the central government. So central government took some time. It was almost 1 year. So the Bombay High Court was lenient enough to understand this impossibility of the client, to understand the problem of the client, and allowed the filing of the appeal. So it is because there is impossibility, right? So obviously you have heard this, and therefore you would also agree that when a person cannot perform the act of appealing, right, because it is not within his control, then he is helpless. So this is an exception to the rule, right? But most of the high courts have not followed, although this sounds very inhuman, right? But the high courts have chosen not to follow because they say that Limitation Act should be interpreted very rigidly. It is such a law that it must be interpreted very rigidly
Because if some right gets settled, right, because a decree has come, when you go in appeal, what does it mean? That a decree has already come or a final order has come and you have to make an appeal against that. So suppose the decree or the final order has already crystallized the right of the other party, and now after a passage of 1 year or 2 years, right, great delay or enormous delay, you would be causing suffering to that party now, right, who got the decree in his favor, and probably now he is well settled, right, as per the decree. So you will be unsettling him, right? So let some loss be caused to an individual for the sake of social peace, right? If we allow this kind of unsettling, then there won't be any peace left, because everybody will keep challenging in spite of enormous delay or inordinate delay. So some people have to suffer, some people have to be sacrificed at the altar of the Limitation Act. So the judges, the courts have interpreted Limitation Act in a very rigid manner, right? So वैसे तो I'm doing this case of Bombay High Court with you, but then I have also given this analysis that how the courts have departed from this maxim. So it's sounding inhuman, right? हो सकता है कि you are also getting dissatisfied that, oh, what kind of law is this? But then this is the law. So maxim is lex non cogit ad impossibilia. So when an act is impossible, it must be excused. Thus, where an act becomes delayed due to act or omission of others upon whom we don't have control, the delay be excused. Example, suppose the plaintiff was unable to institute appeal within 1 year from the date of cause of action, because the government delayed in granting him sanction to institute the appeal. दोनों ही लिख देता हूं यहाँ पे, सूट पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सफिशिएंट कॉज भी है ये। तो सूट अपील पे तो एप्लीकेबल है सेक्शन 5 की वजह से, जो हम आगे पढ़ेंगे, और सूट पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सूट के लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 नहीं लग सकता है, बिकॉज सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सूट। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि सूट में भी मैं डिले माफ कर दूंगा, क्योंकि डिले मेरी खुद की वजह से नहीं हुआ है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। लॉ में लिखा हुआ था कि आई हैड टू टेक प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो प्रायर सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने में देर कर दी, अपॉन whom I did not have any control, right? So I should be given that time. In this case, the delay in institution of suit or appeal will be excused. But in the capital letters I have written, this exception has not been followed by the courts. ठीक है? क्यों? Because almost all the high courts have said that some sacrifice has to be made at the altar of the Limitation Act, because there is a public policy behind Limitation Act that what is settled should not be unsettled, right? If this unsettling is allowed, then the Pandora's box will be opened. So अगर एक दो individuals की sacrifice हो ही जाती है तो हो जाने दो, right? उन्हें कोई और रेमेडी दे दी जाएगी, लेट्स से सम कॉम्पेंसेशन में बी गिवन टू देम अंडर सम अदर लॉ, कहीं ना कहीं जस्टिस का स्कोप होगा, बट लेट नॉट द सूट बी इंस्टीट्यूटेड ऑन दैट कॉज ऑफ एक्शन व्हिच इज टाइम बार्ड नाउ, राइट? इवन इफ कमिंग टू द कोर्ट वाज बियॉन्ड कंट्रोल, राइट? इसमें एक उपाय मैं बता सकता हूं, आपको पता है कि कोर्ट्स मानेंगी नहीं, राइट? अगर आप कोर्ट को ये भी कहेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी, वेयर एज पर द लॉ विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आई कुड नॉट फाइल दिस सूट, तो इसलिए मैं चुप रहा। तो ऐसे में आई एडवाइज स्टिल गो टू द कोर्ट, इंस्टीट्यूट योर सूट, राइट, एंड make a miscellaneous application that sanction of the government, which is the requisite in this case, has been applied for, right? And
the sanction is still awaited, but irreparable loss will be caused if we keep waiting for the sanction. So, your lordship, let there be exemption from prior sanction, or exemption from the requirement of prior sanction from the central government. We can't wait. Otherwise, irreparable loss will be caused to me. Huge loss will be caused to me that cannot be repaired. ऐसा एक miscellaneous application के साथ लगा दो within limitation period. अब sanction के लिए wait करते रहेंगे, right? If the court wishes to continue, तो even without the sanction continue हो जाएगा. When the sanction comes, लगा दिया जाएगा sanction भी record में, right? So the courts want you to do this because your cause of action has taken place. Your cause of action has already occurred. So why are you delaying? A person who wants remedy will not delay, right? Maybe the delay caused by the central government will cause suffering to the central government only, right? When the court may ask the central government for the sanction, the court may direct the central government to give sanction. Let the court handle it. Instead of you waiting with folded hands, go to the court immediately as soon as the cause of action arises or within the limitation period, right? Don't keep waiting for the sanction of the central government. The court will handle it. The court will give directions to the central government or make central government also a pro forma party here, right? You can do this also. And in your prayer, you may say the central government may be given appropriate directions for procurement of such and such sanction required for this case. So do this. So be within time. Why are you delaying it? Yes, sir. Right. So that is why. Right. कर दो एक miscellaneous application file इसमें. हो गया, लगा दो file को. ये कर लो. तो high courts ने सब ने except Bombay High Court, rest of the high courts have said this. कि आप करो ना भाई, आपको चोट अभी लगी है, आप 1 घंटा वेट कर रहे हैं, 2 घंटे वेट कर रहे हैं, 1 साल वेट कर, क्यों? आप आइए ना, क्या पता हम कोई जस्टिस दे ही पाए आपको, right? During the pendency of application for prior sanction before the central government, सोच रहे हो central government को इस बीच कोई first aid तो हमसे ले लो, come for the first aid. And if you are still waiting, it means there is something vicious in your mind. So you come to the court. As soon as your limitation begins, you rush to the court. Don't worry for venial or technical requirements, right? Prior sanction from the central government is not a substantive requirement. It is a technical requirement, right? So why to worry for the technical requirement? Come to the court directly as soon as the cause of action has arisen. That is why this exception has not been followed by the courts after this judgment. That is why this exception we read, the maxim, is only for academic interest, right? It doesn't have any practical usage. Now the 10th point is, since limitation bars a suit for enforcement of a right, but does not destroy the right itself, right? We have already made it clear in all the classes that we had on Limitation Act. We have established this, that Limitation Act only bars you from going to the court for remedy. It does not destroy your right. So you can still exercise your right through other ways other than the courts, right? A defendant in a suit can set up a right in defense, though he could not have enforced that right by a suit. I think I had discussed this point earlier, right? Suppose I have a claim against B, but this claim is time barred. This claim is time barred, right? Now, fortunately, one fine day, B himself files a suit against me, right? Making his claims for which he is not time barred. So I am a defendant in that suit. Now, in my defense,
in my defense, I can raise objection on the basis of the claim which is stale as per the law now, right? Which I couldn't have claimed through a suit because I am time barred. But in my defense, I can raise it. Why? Because delay bars institution of suit, right? It does not bar defense. ये शूटर के लिए है ये बार, डिफेंडेंट के लिए ये बार नहीं. तो if you are made a defendant, then you still have an opportunity, अगर वो relevant है तो, to raise your claim as a defense, so that you can escape from the claim made by B. तो B ने जो claim मेरे खिलाफ किया है, उससे बचने के लिए मैं इसको as a defense use कर सकता हूँ. I can use it as a defense, right? क्योंकि defense पे ये बार नहीं है. It is not a bar on defense. तो इसलिए जो मैं सूट में नहीं भी मांग सकता था, राइट, कोर्ट जाकर, वो मैं डिफेंस में सामने वाले के क्लेम को ऑब्जेक्ट करने के लिए यूज कर सकता हूं. मांग तो अभी भी नहीं सकता. डिपेंडेंट बन के भी मांगना तो वो तो सूट डालना ही हो जाएगा. मांग तो अभी भी नहीं सकता, लेकिन somehow I can defend myself from the liability if at all that happens to be relevant in this case, right? तो मैं अपने डिफेंस में इसे यूज कर सकता हूं. We will see the examples in the questions. Case based questions करेंगे तो we will have examples. So keep this in mind. So what you are barred is filing a suit, right? You are not barred from raising an objection, from raising a defense based on the stale claim, a claim which is otherwise stale, right? So there is no limitation against the defense. This is your mains question. Simply one statement will be given to you, right? You will be asked, there is no limitation against the defense. Discuss or elaborate, right? So this is the principle. कि डिफेंस पे लिमिटेशन नहीं लगता है. लिमिटेशन सिर्फ ऑफेंस पे लगता है. मींस जब आप सूट फाइल करते हैं उस पे एप्लीकेबल है. मतलब आप जो फाइल करते हैं, एप्लीकेशन हो या अपील हो, उस पे लगता है. रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट पर लिमिटेशन नहीं लगता, राइट? 11th point is, we know that an arbitrator is not required to apply the law of limitation, but where a party sets up limitation as defense in an arbitral proceeding, the arbitrator must allow such defense. We have already read that Limitation Act is for courts. It's not for quasi-judicial bodies. It's not for arbitral bodies or any tribunals. But where one party sets up limitation as a defense, then the arbitrator must pay heed to that defense, right? If no party raises any defense on the basis of limitation, then the arbitration shall continue. An arbitral award, if given, would be executed like a decree of a civil court, right? Under Order 21 of CPC, it can be executed as if it were given by a civil court, right? Now, after that, no party can raise objection कि oh, it was already time barred. ना, अब नहीं हो सकता कुछ, ठीक है? लेकिन when the arbitral proceedings were going on, if the defendant sets up limitation as a defense, then the arbitrator has to take into his consideration. And if it is really time barred, then he must stop the arbitration proceedings. So he must allow the limitation as defense in an arbitral proceedings. But he cannot do anything, even if it comes to his knowledge that the claim is time barred, and in spite of that an arbitration proceeding has been started. He cannot do it himself now. Some party has to raise limitation as a defense. So obviously it will be the defendant, the other party, who will raise it as a defense. If no one raises a defense, the arbitrator has no duty like the court has, right? You remember in the last class we had read that the court has the duty, even if no party claims defense of limitation, even if no party makes a preliminary objection of limitation,
then the court has the duty to see it itself and see if it is time barred. Right? It's the court's own duty. Such a duty has not been imposed upon an arbitrator. Right? तो अगर आर्बिट्रेशन के लिए मैं जाता हूं, वो टाइम बार्ड है, आर्बिट्रेटर को पता भी चल जाता है, तब भी वो आर्बिट्रेशन शुरू कर देगा और कराता रहेगा जब तक कि दूसरी पार्टी आर्बिट्रेशन में लिमिटेशन को डिफेंस के तौर पे ना पेश करे. अगर दूसरी पार्टी ने भी नहीं किया तो आ जाएगा अवार्ड. एंड वंस द अवार्ड हैज कम, नाउ इट विल बी एनफोर्स्ड एज इफ इट वर अ डिक्री पास्ड बाय अ सिविल कोर्ट. राइट? क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट. तो राइट तो था ही ना, इसलिए अवार्ड आ गया. So it is well settled rule that law of limitation does not bar a defense. It only bars actions. Suppose a court did not pay attention to the point of limitation and completed the trial even though it was time barred. Right? Court ki duty thi. I had already told you, I think, that it will have a telling effect on the career of this judge who failed in his duty to check whether it was time barred or not. राइट? लेकिन अगर उसने मान लो ट्रायल कंप्लीट कर लिया और डिफेंडेंट ने, जिसका की ड्यूटी बनता था कि ट्रायल के समय ही या फर्स्ट इंस्टेंस के ही कोर्ट में एज अ प्रिलिमिनरी ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन लिमिटेशन को लेता, लेकिन उसने भी नहीं लिया, ही ओमिटेड टू डू सो, तो अपील में क्या वो फर्स्ट टाइम लिमिटेशन को ऑब्जेक्शन बना सकता है? आंसर है हाँ. वजह? क्योंकि a court that acted beyond limitation is said to have acted beyond jurisdiction, right? And hence the decree by the court is null and void. It's void ab initio, so null and void. And hence in the appellate court, and not only in the first appeal, in the second appeal also, right? And if the defendant, now here the respondent, raises it for the first time in the second appeal, the appellate court will not say कि कहां थे तुम, ट्रायल प्रोसीडिंग्स में क्यों नहीं बोला. Though the appellate court will definitely scold him, right? थोड़ा डांटेगा तो जरूर appellate court का जज, लेकिन उसकी मजबूरी है कि जो डिक्री वॉइड है उसे एनफोर्स तो कराया जा ही नहीं सकता. इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. ठीक है? तो इसलिए लिमिटेशन का जो डिफेंस है आप किसी भी स्टेज में ले सकते हैं, ट्रायल में, फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में, जब भी रियलाइजेशन हो जाए जुडिशरी को कि ये एक वॉइड डिक्री पे हम काम कर रहे हैं, राइट, वो उसे सेट असाइड कर देगा. क्योंकि a court that has acted beyond limitation period is a court that has acted without jurisdiction, and a decree given by a court without jurisdiction is null and void. Under Order 1, Rule 10, a person shall not be impleaded or any amendment adding some defendant or some claim in a plaint which has become barred by limitation shall not be allowed. ठीक है? In Order 1, Rule 10, CPC में हम पढ़ेंगे impleadment. तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप सूट में नहीं जोड़ सकते हैं जिसके खिलाफ आप टाइम बार्ड हो चुके हो, राइट? इवन दो आपने सूट ए के खिलाफ डाला था when you were within limitation, but when you realized that this suit should have been filed against B also, मतलब A और B दोनों को डिफेंडेंट बनाना चाहिए था, अब आपको एहसास हुआ, लेकिन जिस दिन एहसास हुआ उस दिन आप बी के खिलाफ टाइम बार्ड हो चुके थे, तो अब बी को एज अ पार्टी आप नहीं ऐड कर पाएंगे, ए से ही आपको काम चलाना पड़ेगा. वजह? यू आर टाइम बार्ड. ठीक है? उसी तरह से अमेंडमेंट अगर आपको करना है, राइट, एक तो पहले ही बता दूं कि एक बार ट्रायल अगर शुरू हो गया, मींस इशू फ्रेम हो गया, तो उसके बाद अमेंडमेंट तो समझ लो लगभग नामुमकिन है. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अमेंड द प्लेंट. द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू टू अमेंड द प्लेंट. बट बिफोर दैट इफ यू गो फॉर अमेंडमेंट, तो वहां भी यू हैव टू सी कि अमेंड करके जो आप क्लेम जोड़ने जा रहे हो, राइट, सपोज यू आर बाय अमेंडमेंट एडिंग सम क्लेम, राइट, जो ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके, उसके अलावा आपको कोई और क्लेम याद आ गया, वो आप जोड़ने जा रहे हैं.
तो देखना होगा इस क्लेम के लिए आज की डेट में आप विद इन लिमिटेशन हो या नहीं। अगर नहीं हो तो नाउ वही जो क्लेम कर चुके उसी से काम चलाना पड़ेगा, नया क्लेम आप ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर दिस यू आर ऑलरेडी टाइम बार्ड, अब टाइम बार्ड है। ठीक है, सपोज अ प्लेंट ऑफ a suit is presented within time but it is defective. पता नहीं, I have a feeling of deja vu. I feel I have done this. At least I think I discussed all these things. यस सर, है ना, इंट्रो में हुआ था सर ये। कर लिया था ना। चलिए Yes, तो sir. लिख ले कर लिया। फिर भी अंकाशा ने कहा है तो इसका मतलब लिखा नहीं होगा, हमने लिख लेते हैं। Suppose a plaint of a suit is presented within time but it is defective. इस पे मैंने आपको बड़ा रिडिकुलस एक बात भी बताया था कि कभी कभी हम जानबूझ के डिफेक्टिव डाल देते हैं। डिफेक्टिव Yes, sir. डिफेक्टिव वकालतनामा वेलफेयर स्टैंप नहीं डाला, हो गया डिफेक्ट। उधर से मेल आता है, इकलौता डिफेक्ट क्या है, वेलफेयर स्टैंप नहीं चिपकाया या 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देना था, नहीं लगाया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डिफेक्ट्स ना, राइट, ऑफिशियली बता रहा हूं आपको मैं, हम सभी करते हैं। ऑल ऑफ अस हु आर इन लिटिगेशन वी डू दिस फॉर वेरियस पर्पसेस फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, राइट, एंड दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कोर्ट, तो इसलिए करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, राइट। ये एक डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, नहीं तो क्या सिखा रहा है। नहीं सर, एक बार मेरा जूनियर कराया था, उसने क्या लिखा था, वकालतनामे पे लगाया नहीं, उसने ना लिख दिया वेलफेयर नॉट अवेलेबल, वो एडमिट हो गए। ठीक है ना, तो हाँ, तो आप नहीं करना ये सब, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, दिस इज प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, राइट। काउंसिल से ये एथिक्स एक्सपेक्ट किया जाता है। I hope you understand why I'm speaking all these things. So suppose a plaint of a suit is presented within time, but it is defective. It is a settled rule that the date on which the plaint is presented to the proper officer, itni requirement hai, the plaint should be presented to a proper officer. Plaint khud proper hai ki nahi, ye requirement hai hi nahi, ऑफिसर प्रॉपर होना चाहिए। तो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री में जाके दे आए, ना कि बाहर जो गार्ड बैठा हुआ है उसको दे आए। तो प्रॉपर ऑफिसर को आपने प्लेंट अगर प्रेजेंट कर दिया तो डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ द प्लेंट वही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेशक आप रीफाइल करें, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स कर दें, ठीक है, तो भी आप विद इन टाइम माने जाएंगे, माना जाएगा कि यू हैव डन इट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। It is a settled rule that the date on which the plaint is presented, even with defects, is still nonetheless a plaint, and that the date of presentation will be considered as the date of institution of the suit for the purpose of this section. The plaint may be refiled, refilled nahi, refiled, after removal of defects after the expiry of the period of limitation. It's okay, right? You are not time barred now. The same rule applies to deficit court fees if the court allows time for depositing the remaining court fees. Sometimes deficit court fees is there, so the court determines, the registrar determines that the court fees should have been 1 lakh rupees, whereas you have submitted only, deposited only 50,000. Then you will be asked to pay the remaining court fees, right? Only then there will be initiation of the suit. But your suit has been instituted. This is a defect. Right, inadequacy of court fees is a defect. The defect can be removed, right? You are not time barred now because you have come to the court, the proper officer of the court, within time, within limitation. So I think our discussion on section 3 is over. Section 4 we will do ourselves. So let us skip section 4 for the time being, right? बच्चों वाला है तो इसलिए उसको अभी हम स्किप करते हैं। Let us come to section 5, which is very important. Breakup है आपके सामने, this is the breakup of section 5 Limitation Act. First point is an appeal or application. और एप्लीकेशन में भी सारे एप्लीकेशंस चलेंगे except application for execution
अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो एप्लीकेशन है उस पर सेक्शन 5 नहीं लगता है, सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट। ठीक है, तो मतलब सेक्शन 5 का बेनिफिट आपको तब नहीं मिलेगा जब आप एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाने जाते हो और टाइम बार्ड पाए जाते हो, राइट। और क्योंकि वैसे भी यू हैव वेरी लॉन्ग टाइम गिवन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट हैपेंड। हेलो सर, ये 3-4 बार हो गया है। मेरी परसों की भी क्लास में ठीक 7:30 बजे कोई और घुस गया क्लास में और मेरे क्लास को बंद कर दिया, और अभी भी मैं क्लास ले रहा हूं तो यही हुआ है, किसी और डिवाइस पे आ जाने की वजह से मेरा आई हैव बीन साइंड आउट, और यह चौथी बार हुआ है सर। But sir, I will disconnect. मेरे पास तो सर परसों भी यही हुआ था, उसके पहले भी एक बार हुआ तो हमने आपको बोला भी था।